Chapter 1, Locating Places. So in this chapter, let us learn about globe, latitudes, longitudes and grid. A globe. So what is a globe? A globe is a model of the earth. Globe earth का model है. So why do we need a model of the earth? We need the model of the earth to study about the earth. अर्थ के मॉडल की क्या ज़रूरत है? ग्लोब की क्या ज़रूरत है? इट इज़ नीडेड टू स्टडी अबाउट द अर्थ. अर्थ के बारे में स्टडी करने के लिए वी नीड अ ग्लोब. सो स्टडी ऑफ द अर्थ लाइक शेप ऑफ द कंट्रीज, डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रीज, किसी भी कंट्रीज़ के बीच में कितना डिस्टेंस है, द साइज ऑफ द ओशियंस, right? So to know many such things we need a model of the earth. हमें अर्थ के मॉडल की ज़रूरत पड़ती है and that is a globe. So now when we look at a globe we are able to see only one side. To see the other side we have to rotate it, right? So हम जब ग्लोब को देखते हैं हम सिर्फ उसकी एक साइड देख सकते हैं. टू सी द अदर साइड, ग्लोब की दूसरी साइड देखने के लिए हमें उसको टर्न करना पड़ेगा. द ग्लोब रोटेट्स ऑन अ पोल दैट पासिस थ्रू इट. सो हियर इट इज़ ऑब्वियस दैट देयर इज़ अ पोल इनसाइड द ग्लोब. इफ़ दिस पोल इज़ नॉट देयर, अगर ये पोल ग्लोब के अंदर नहीं होगा देन द ग्लोब विल fall down because it is not the earth, it is the model of the earth, and this pole that passes through the globe is called an axis. Yes, so now after understanding an axis through globe, let us understand it in terms of earth. So an axis is an imaginary line on which the earth rotates. एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है. इमेजिनरी मतलब सिर्फ इमेजिन करना है, सोचना है कि एक लाइन है पोल जैसी जिस पे द अर्थ इज रोटेटिंग. नाउ द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड पोल्स. द टॉप पॉइंट ऑफ द पोल इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल and the bottom point of the pole is called the south pole, right? एक्सिस का टॉप पॉइंट, ऊपर का पॉइंट इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड एक्सिस का नीचे का पॉइंट, द बॉटम पॉइंट इज कॉल्ड द साउथ पोल. सो नाउ you have to take a note here that the north pole and south pole are just points and not a line. So on a globe we can see a number of lines. globe पे हमें बहुत सारी lines दिखती है. All these lines are just imaginary lines. That means it's just drawn on a globe for the study of the earth. Reality में ये lines earth पे नहीं होती. We just have to imagine. हमें सिर्फ सोचना है कि these lines are there on the earth. So now, why are these lines there on a globe? So as the name of the chapter suggests, locating places, yes, through these lines, with the help of these lines, we can mark a place on a globe. We can locate a place on a globe. Like cities means shahar, for example Mumbai, then countries, example our country India, and ocean, what you call Mahasagar, means a large expansion of more than one sea is called an ocean. And also to mark continents. Now what are continents? Continent means a very large area of land surrounded by water. Means land का एक बड़ा सा हिस्सा जो कि ocean water से surrounded हो. For example, Asia. Our country India, many other countries like Japan, Indonesia, China, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, as a total 50 countries are the part of one large continent, and that is Asia. And yes, it's good to know that Asia is the largest continent in the world.
So now we know that we can locate all the cities, countries, oceans and continents easily on a globe with the help of these number of imaginary lines passing on a globe. All these imaginary lines drawn on a globe makes it easier for us to locate any place on a globe. So now there are two types of these imaginary lines on a globe. They are the latitudes and the longitudes. Latitudes. The horizontal imaginary lines drawn on a globe are called latitudes. Means latitudes horizontal imaginary lines है. Horizontal means which are drawn from east to west. Now all these lines of latitude are parallel to each other. ये सारी latitude की lines एक दूसरे से parallel है. Parallel means lines drawn in the same direction and the distance between these lines are also the same. ऐसी lines जो same direction में draw की गई हो और सभी lines के बीच का distance भी same हो. So the lines of latitude are also parallel to each other. Thus, they are also called parallels of latitude. Yes, lines of latitude को parallels of latitude भी कह सकते हैं. Now all these lines are numbered. Yes, latitude की हर एक line को number किया गया है degrees में. So if you take a protractor and put it right there halfway between the poles, the North Pole and the South Pole, there's a line which divides the earth into two equal parts. Right? North Pole और South Pole के बीच exactly if we move halfway between the poles, there's a line. एक latitude की line है जो earth को two equal parts में divide करती है. This line of latitude is called the equator. Latitude की इस line को हम कहेंगे equator. Right? अर्थ का वो पार्ट जो इक्वेटर से नॉर्थ में है दैट पार्ट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इक्वेटर के साउथ में जो पार्ट है दैट पार्ट इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर. सो ऑल द लैटिट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर मार्क्ड एज N and the latitudes in the southern hemisphere are marked as S. For example, North Pole is in the northern hemisphere, so it is marked as 90° N, and South Pole southern hemisphere में है, so South Pole is marked as 90° S. Now besides the equator, there are 4 other important latitudes. So in total, there are 5 important parallels of latitude. They are the equator, the Tropic of Cancer, the Tropic of Capricorn, the Arctic Circle and the Antarctic Circle. Our country India lies in the northern hemisphere. Yes, India northern hemisphere में है and the Tropic of Cancer passes through the middle of India. There are 180 parallels of latitude excluding the equator. Means equator को छोड़ के there are 180 parallels of latitude. बाकी सारी latitude की lines इक्वेटर की लाइन से पैरेलल है. So parallels of latitude are 180 but we can say that lines of latitude are 181. So there are 90 parallels of latitude in the northern hemisphere and 90 parallels in the southern hemisphere. That means कि इक्वेटर के नॉर्थ में there are 90 lines of latitude and इक्वेटर के साउथ पार्ट में there are other 90 lines of latitude. That means 90 plus 90 total 180 parallels of latitude. Now all these parallels of latitude are drawn at a distance of 1 degree. That means कि हर एक लाइन के बीच में 1 degree का distance है. And all these parallels of latitude form a circle. मतलब ये सारी parallel lines circle form करती है because earth का shape spherical है, round है, and thus because of the spherical shape of the earth, when the lines of latitude are drawn from east to west, it forms a circle. Now the length of these lines keep on decreasing as we move away from the equator towards the poles. That means कि इक्वेटर से जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की साइज लेंथ कम होती जाएगी and that is because of the shape of the earth. So from all the latitudes earth का shape round होने की वजह से इक्वेटर की साइज सबसे बड़ी है.